हेलो एवरीवन, दिस इज नैंसी एंड वेलकम टू माय चैनल नैंसी सिंह। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर कम्बिनेशन एंड लीनियर स्पान। लीनियर स्पान में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स भी पढ़े थे। आज एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे। एल इज द सबसेट ऑफ वी इज सब स्पेस ऑफ वी। लेट ए एंड वी बी एनी टू scalars. Let u and v be any two elements of L of S. Then u and v are LCs of finite number of elements of S. U equal to summation I equal to 1 to m ai alpha I v equal to summation j equal to 1 to n. इस पे 1 to m रहेगा, इस पे 1 to n रहेगा। bj beta j where m and n are finite and alpha I beta j belong to S. Then au plus vv equal to a summation I equal to 1 to m ai alpha I plus b summation j equal to 1 to n bj beta j equal to summation I equal to 1 to m a into ai alpha I plus summation j equal to 1 to n b bj beta j, which is LC. LC means linear combination, इसको हम शॉर्ट में LC लिखेंगे, of m plus n element of S. Therefore au plus bv belong to L of S. Hence au plus bv belong to L of S. Every av belong to F. uv belong to L of S, and so L of S is a subspace of V. इसमें हम रिमार्क पढ़ेंगे। रिमार्क S is a subset of L of S. L of S is a subspace of V. Imply that L of S is a subspace of V containing S. अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे।
L of S is the smallest subspace of V containing S. Proof. We know that S is a subset of L of S. L of S is a subspace of V. Therefore, L of S is a subspace of V containing S. Let W be any other subspace of V containing S. एनी अदर को हम हाईलाइट करेंगे. लेट u इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n ai alpha I be any element of L of S, then ai belong to F, alpha I belong to S, imply that ai belong to F, alpha I belong to W, S is a subset of W, imply that summation I equal to 1 to n ai alpha I belong to W. That is, U belong to W, thus L of S is the smallest subspace of V containing S. आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.